नहीं डांटेंगे कि डांटना ठीक है कि नहीं डांटना, बोलिए। डांटना ठीक इसलिए है कि समझ रहे हैं ना, आपके भविष्य पे मेरी नजर है, वर्तमान पे नहीं है, इसलिए मैं डांटता हूं, ठीक है। वर्तमान पे नजर रहती तो मैं क्लास लेके चला जाता, ठीक है। चलिए ओके, सो ये समझ में आया, चोलाज एंड राष्ट्रकूटा, देन चोलाज, देन later Chalukyas. Okay, later Chalukyas. Now after this, Cholas, the most important power of India. Only one dynasty has tried to expand the boundary outside India, that is Cholas. श्रीलंका में, एंड देन इस साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, राजेंद्र फर्स्ट, है ना, मलय पेनिनसुला मीन साउथ ईस्ट एशिया में नेवल एक्सपेडिशन उसने किया था। गेटिंग द पॉइंट? So because Indians never tried to go for expansion because India had everything. जब आप में संतुष्टि का भाव रहता है तो आप संत बन जाते हैं। Getting the point? वो नुकसान भी करता है कई बार, बट तो ये चोलाज, और उसके बाद क्या बोलिए, राष्ट्रकूटाज। उसके बाद 3 स्मॉल डायनेस्टीज आएंगे। यादवा ऑफ देवगिरी, यादवा महाराष्ट्र, देवगिरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र। यादव, यादव डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी। यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी। जब पता था कि एंशिएंट की क्लास शुरू होने वाली है तो कम से कम रिवाइज कर लेते, इसलिए कल की छुट्टी दी गई थी। यहां पे कौन सी डायनेस्टी? बेरांगल, काकातिया ऑफ बेरांगल, काकातिया डायनेस्टी, काकातिया, काकातिया ऑफ वरांगल, काकातिया डायनेस्टी, काकातिया है ना, आंध्र प्रदेश वरांगल, काकातिया डायनेस्टी, काकातिया, KAKTIY, काकातिया। वरांगल इज ए प्लेस ना, हैदराबाद वरांगल, आंध्र प्रदेश वरांगल, काकातिया। और ये देवगिरी कहां पे? महाराष्ट्र। एंड देन हियर कर्नाटका, होयसलाज मीन्स होयसलाज, होयसलाज ऑफ द्वार समुद्रा, द्वार समुद्रा मीन्स हेलेबिड, कैपिटल इज हेलेबिड, हेलेबिडो, द्वार समुद्रा। द्वार समुद्र इज प्लेस, है ना, द्वार मीन्स गेट, समुद्र नीचे, है ना, सो द्वार समुद्रा। कर्नाटका हेलेबिड, होयसलाज, होयसला डायनेस्टी। 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज बिटवीन around 1200 to 1400 AD approx. Helebid the capital of this one. All are capitals, Devgiri, na, Barangal, and this. Okay. Capital of Dwar Samudra. Dwar Samudra was the kingdom. Hoysala was the dynasty. Okay. So a small kingdoms, and a short-lived kingdom, short-lived. This is the time when Muhammad bin Tughlaq was ruling, na, means Tughlaq dynasty in North India. He made the, na, he made the raid, he made the invasion. So he came here, and then here also. So attack, you can say Devgiri and this Barangal and then Hoysalas. At that point of time, when he attacked these places, 2 brothers, Harihar and Bukka, were administrator of Dwar Samudra, very prominent, very famous. So they were taken to prison. They were brought to Delhi. They were converted to Islam. Again, they were sent here to rule as the governor of Delhi Sultanate. Who? Harihar and Bukka. They were reinitiated to Hinduism by their Guru Vidyaranya. Vidyaranya, Rishi Vidyaranya. And then they established a kingdom, which is known as Sangam Kingdom. Sangam Kingdom or Sangam Dynasty, better to say. They established Vijayanagar Kingdom. Vijayanagar Kingdom, which became empire later on.
with Sangam dynasty. Harihar and Bukka. Sangam was the name of their father. Sangam is another name. We have seen na Sangam age. So that Sangam means confluence of poets, meeting of poets. Take down somewhere in the footnote. Sangam. Sangam age means meeting of poets. Confluence. Confluence of poets. Sangam means confluence of poets. Sangam age. Confluence means meeting point means Sangam. Ganga, Yamuna, Saraswati. Sangam. Meeting place, meeting point. So it's a confluence of poets. Now this Sangam is the name of the father of Harihar and Bukka. So they established Sangam dynasty. In Delhi Sultanate, Ilbari, Khilji, Tughlaq, Sayyid and Lodi ruled. So here in Vijayanagar, Sangam dynasty, Sulu dynasty, Tulu dynasty and Arabidu dynasty. Krishnadev Rai belongs to Tulu dynasty. Getting the point? So here Vijayanagar came. So 3 dynasties.